welcome back everyone. So today we got our own mic. It's so long that I'm saying it. Okay, now first of all, today we will not only talk about certain current affairs, but we will also look into other things. Like now, only on 16th is our exam, and the days we have left are with 3 days. We are left with around 15. Okay, so what to need to do in those 15 days? And what other things we can do, we will talk that in today's video. Now first of all, let's start with certain current affairs, important current affairs which might come. Okay, so now there are certain current affairs which might come. Okay, now first we will be looking at lieutenant general. Now who is lieutenant general? So lieutenant general is second highest rank in army. अगर हम उसको कंसीडर करें फील्ड मार्शल को, then it will be third highest, but field marshal दो ही में, and it's very less possibility that in future we will be having certain such post. Okay, so lieutenant general MV Suchindra Kumar appointed as Vice Chief of Army Staff. Okay, so Lieutenant General MV Suchindra Kumar appointed as Vice Chief of Army Staff. Okay, now whatever the things related to Army, Navy, Air Force, Coast Guard, or other CAPFs or to defense, it makes that news crucial. Okay, now similarly, our second news is Colonel Noreen Shane. Colonel Noreen Shane John becomes first officer to command a battalion which will be responsible to train Agniveer. So, Colonel Noreen Shanit John become the first officer. And what makes this news important is that she is the first lady officer. ठीक है ना? To command a battalion which will be responsible to train Agniveer. So last year Agniveer was in very much of news. Okay, you need to know what is Agniveer. ठीक है? Recent मुद्दा था, काफी इसके बारे में अच्छी बातें भी हुई, काफी बुरी बातें भी हुई. There were lots of riots also and anarchy caused. Okay, so that this makes this news important. Third, third is regarding football. Now, there are certain people in the world who have a different kind of image, and उनसे जुड़ी कोई भी news होती है that makes that current affair important. Lionel Messi is one such person because they won the World Cup. Now, Lionel Messi has bagged the best FIFA Lionel Messi has received the best FIFA player of the year. Okay, so we all know that this might be the last, I guess this was the last World Cup for Lionel Messi which he has played for Argentina. Okay, he also plays for a club. Recently he changed from Barcelona. So, and he's a very famous personality. There are always an arch rivalry between Messi and Ronaldo. Okay, so Lionel Messi has received the best FIFA Player of the Year award. Okay,
Now, our next news or current affair. So, Aurangabad has been named as Chhatrapati Shivaji Nagar. Now, Aurangabad has a legacy of being renamed or named after the last powerful Mughal ruler, Aurangzeb. Okay, so Aurangzeb was a staunch Sunni Muslim. So, when he conquered or when he started his expedition into the southern area, so the Deccan area, at that time he conquered this place and named it Aurangabad. Okay, recently it has been renamed as Chhatrapati Shivaji Nagar. Okay, see, renaming was made popular by Yogi Adityanath. Okay, when he changed the name of Allahabad to Prayagraj and certain other places also. Recently, there was another news where uh, the Mughal garden in the Rashtrapati Bhavan was renamed as Amritvan. So these kind of thing you need to know कि उसका किसका नाम क्या कर देगा किसका नाम क्या कर देगा. Okay, now our next current affair will be regarding awards. Now, Dada Saheb Phalke Award. So, in this award, the best film award was received by the Kashmir Files. Although this movie is very controversial movie, okay, so there is a possibility that whatever the controversies are there, the controversies make someone what come into the limelight or make them help them making popular. Okay, for example, Pathan. If Pathan movie wasn't that much of into news for boycott and boycott Pathan, Shah Rukh Khan this and Shah Rukh Khan that, अगर इतना सब नहीं होता तो शायद ये मूवी 1000 करोड़ क्रॉस नहीं करती. लेकिन इसको कंट्रोवर्सी को कि उसको बॉयकॉट करने की वजह से क्या हुआ, उस मूवी को ज्यादा प्रमोशन मिल गया, ज्यादा प्रमोशन वजह से वो मूवी 1000 करोड़ पहुंच गई. Although all this boycott shit is very disturbing thing because we shouldn't do this. क्योंकि इस एक मूवी बनाने में सिर्फ एक एक्टर का हाथ नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं. But we need to pay focus on our exam, okay, so that we can make our country a better one. So our next category of award will be best film of the year, and that is again RRR. Now this movie RRR ये पिछले लगभग एक साल से न्यूज में होगी, रिलीज होने से पहले भी रिलीज होने के बाद भी ये न्यूज में रही, बिकॉज this movie has brought so much of proud to our country that we can't ever thank this movie or SS Rajamouli sir. Okay, they created a masterpiece. The song Natu Natu, it won the Oscar. Okay, then Ramcharan was invited for Golden Globe, hosting the Golden Globe. Now this movie also got best film at the best film of the year award at Darshan Phalke Awards. So this movie is in news. So there might be a question which you need to know about RRR. So you need to know facts about RRR. There might not be questions on caste or era. Okay, there might be questions on in which category it won the award or in which it got Oscar. So it get in the music category.
Okay, so such kind of news will be there, and such kind of questions will be there from RRR. Now, now let's talk about certain other facts and other things which you need to know about this exam. Now, there's a popular saying that it's not always working कि pressure में अच्छा काम हो. Sometimes pressure lead to chaos, and chaos lead to much more mistake. Now, what happens whenever the exam is near? For example, we have just 15 days left, and when we have 15 days left, we tend to become more and more into tension, anxiety about that, and get stressed over the exam कि मेरा होगा ही नहीं. First of all, you need to not to worry about कि मेरा होगा ही नहीं होगा, because UPSC has always been and will always be a place of uncertainty. Okay, कोई बता नहीं सकता कि उसमें से कहाँ से क्या आएगा. So there is no fixed book or no fixed mantra which can say कि आपका एग्जाम क्लियर ही होगा. There is no fixed mantra. Okay, because UP has in past also and in future also it will be like that. ठीक है, because it is creating officers, it is recruiting officer, it is conducting examination for officers. And officer कोई अगर यही मतलब कि वो उस प्रेशर में और जब उसको अनोखी अनोखी सिचुएशंस ना मिले जब तक, तब तक उसका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं आ सकता. An officer need to prepare for each and everything. That's why the questions keep on changing, but there are certain gray areas or certain areas from which कि यार यहाँ से तो आएगा ही आएगा, because we mark that area. And similar thing we'll be doing today, that we have only 15 days left, and today we will be marking certain areas which at in final we can prepare so that we can clear our examination. Okay, now first is, let's take 15 days. Today's 20th, almost ended 29, 30, 31. Then 15 days of April. But those last 2 3 days don't count those, because उन 2 3 दिनों में ऐसा भी सकता है कहीं पे जाना पड़ेगा, शादियों का दोबारा सीजन शुरू हो चुका है. ठीक है. Now what will happen, what can we do? 300 maths. No, मैथ्स वी हैव प्रिपेयर्ड इन स्कूल, क्योंकि ये जो एग्जाम देंगे या तो पीसीएम पीसीबी, एंड बहुत रेयर चांस होंगे मेरे जैसे कोई बेवकूफ होगा जो आर्ट साइड से ये एग्जाम देने जाएगा. ठीक है. सो मैथ्स हमने प्रिपेयर कर लिया. इसी के साथ मैथ्स के साथ में हमारा और क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री. सो अराउंड 400 to 450 marks we have prepared. ठीक है. इंग्लिश, इफ यू इंक्लूड इंग्लिश आल्सो तो 200 marks की इंग्लिश होगी. Around 600 we have prepared. Okay, now what happens that the rest 300. Okay, इसमें हमें क्या करना है? Now if we talk about history, so there has been a tendency, or there have been questions, from the bhakti movement. Okay, now what is bhakti movement? In the bhakti movement chapter which was in the medieval history, okay, medieval history में आपका भक्ति मूवमेंट आता है, और भक्ति मूवमेंट के दो पार्ट होंगे. आपका एक होगा सूफीज्म और दूसरा आपका होगा भक्ति मूवमेंट. नाउ अंडर सूफीज्म you will be studying about शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, such kind of personalities. Now ये जो क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा? इन क्वेश्चंस में आपको करना होगा कि इनमें ये कहां पर ये पैदा हुए, या कहां पर इनको मेन वो रखा गया, कहां पर. जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह क्या है? अजमेर में, इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अजमेर इनकी बहुत फेमस दरगाह है. ठीक है. निजामुद्दीन औलिया, इनके ऊपर तो ये दिल्ली के बहुत फेमस सेंट थे, सूफी सेंट थे, और इनके ऊपर तो पूरा रेलवे स्टेशन का नाम है, निजामुद्दीन स्टेशन. सो ऐसी पर्सनालिटीज का आपको नाम याद रखना होगा. नाउ कमिंग टू भक्ति. सो इन भक्ति यू नीड टू नो अबाउट Narsingh Mehta. Now,
इफ यू बिलोंग टू अ हिंदू हाउसहोल्ड एंड मोस्टली नॉर्थ इंडिया, आप लोग नरसिंह को जानते होंगे, बिकॉज इन आवर फोक टेल्स आल्सो एंड आवर फोक सॉन्ग्स आल्सो we have mentioned or we have heard of this person Narsingh Mehta. Then Mirabai, after Mirabai there will be Chaitanya, Shankara, Shankara's Advaitwad. Okay, then Ramanuja, इनका विशिष्ट अद्वैतवाद. ओके, सो ऐसी पर्सनैलिटीज भक्ति मूवमेंट में जो ये थी, इनके बारे में हमें जानना होगा कि कब आए, ठीक है, कहां पर आए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या आएंगे इनके टाइम पीरियड का. फॉर एग्जांपल शंकरा केम इन द 9th century, रामानुजा केम इन 12th century. ओके, सो यू नीड टू क्वेश्चंस कैसा है, क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से पहले कौन आया, चार पांच आपको नाम दे देंगे, ठीक है. यहाँ पर अगर आपको एक दो का भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में आपका पॉलिटी बचता है. So what happens recently, ये anti-defection law and all these political scenarios are going on with Rahul Gandhi and other people. There are a lot of horse trading also. So आपको पार्लियामेंट वाला जो आपका पार्ट है फ्रॉम आर्टिकल 79 टू 117, ये एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, क्विक रिवीजन इसको दे दो, ठीक है ना. उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को क्विक रिवीजन दे दो. उसके बाद ज्योग्राफी, गो एंड लुक एट मैप, ठीक ना. ज्योग्राफी मैप को देखिए, मैप को देखने के साथ साथ व्हाट हैपेंस दिस ईयर देयर आर लॉट्स ऑफ अर्थक्वेक, टर्की में अर्थक्वेक आया. सो आई कैन गारंटी वन थिंग दैट देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन अर्थक्वेक, हाउ इट हैपेंस. जैसे अर्थक्वेक का आपके पास एपिसेंटर होगा, फोकस, ठीक ना. सो such kind of terminologies or such kind of words will be coming, उनका आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है. अर्थक्वेक कैसे आता है, टर्की में क्यों आया, ठीक है, क्योंकि टर्की में बहुत भयंकर आया था. तो सो एंड वहां पे क्या चला था, वहां पर इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ठीक है ना, हेल्प टर्की के, टर्की में टर्की ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है ना. सो ऐसे आपको नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि टर्की में ऐसे भूकंप आया, फिर भूकंप का साथ साथ अब ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाई द अर्थक्वेक occurred, because there are the our entire globe is divided into plates, major and minor plates, ठीक है. ये प्लेट्स क्या होती है, कोर की वजह से, कोर क्या है, पूरा पूरा लिक्विड में, लिक्विड में उस वहां पर मैग्मा भरा हुआ है, और वो मैग्मा क्या करता है, पुश करता है. मैग्मा रोटेशन की वजह से क्या होता है, पुश करता है. ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ मैग्मा पुशेस, और मैग्मा जब पुश करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर आपकी जो प्लेट्स होती हैं ये टकराती हैं, और जब प्लेट्स टकराती हैं तो आपके सरफेस पे मूवमेंट होगी. तो आपको पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, इन तीनों वेव्स के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए. और कल मैं आपको लिखवा भी दूंगा, कल की क्लास प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं इनको शॉर्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, कि वेव्स क्या होती है, कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और कहां पर ये आपकी बाउंड्रीज मिलती हैं, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा. सो दीज आर सर्टेन एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस कि यहां पर क्या होगा, ठीक है. ओके, वी विल सी यू टुमारो. टिल देन, बाय बाय.